Hello and good evening, everyone. So, welcome to today's daily answer writing session. Good evening, all. So, good evening, everyone. I hope my voice is clearly audible. So, I hope my voice is clearly audible. Is my voice clearly audible to everyone? Okay. So, again, today's question is on internal security. Okay. And रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड और अगर इंटरनल सिक्योरिटी से आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे इसी थीम पे एक पीवाईक्यू आ चुका है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म दोनों के बीच में क्या लिंक है, राइट? सो द लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड terrorism. Okay, organized crime and terrorism. Now please remember this is a repetitive theme. Okay, पॉसिबिलिटी है आपको या तो इस पे एज अ होल क्वेश्चन आ सकता है या ये कहीं पे आप एज अ पार्ट यूज करोगे. ओके, और जो कंटेंट इसके आंसर में हम डिस्कस करेंगे यू कुड राइट इट, दैट इज रेडीली यूजेबल कंटेंट. आप सीधा सीधा वो एग्जांपल्स, वो पॉइंट्स जो है, इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन दिस थीम यू कैन राइट अवे यूज इट. ठीक है. नाउ आई होप आप सबने जो है आंसर लिखने की कोशिश की है. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव ट्राइड. अगर नहीं लिखा है नो इश्यूज, वी विल डिस्कस इट, उसके बाद लिखना. ठीक है, बट डू राइट आंसर. ठीक है, डू राइट आंसर. नाउ अगेन द स्टेप वन इज यू रीड द क्वेश्चन, ब्रेक इट इनटू पार्ट्स. आई थिंक दैट इज फेयरली इजी नाउ, राइट? बट नाउ वन मोर थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, राइट? कई बार हम लोग ना क्वेश्चन की डिमांड से थोड़ा डेविएट हो जाते हैं. ठीक है, सो डिमांड क्या है? डिमांड मेन है, ये नहीं है डिमांड की टेररिस्ट ग्रुप ने क्या करते हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम अलग से क्या करते हैं. सम आंसर्स दैट आई हैव सीन, दे हैव रिटन कि भाई टेररिस्ट ग्रुप ये करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड जो है क्रिमिनल नेटवर्क्स वगैरह वो ये काम करते हैं, राइट? और फिर उनका इम्प्लीकेशन लिख दिया. बट डिमांड इज नॉट दैट. डिमांड इज कि कैसे ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, हाउ दे बोथ वर्क टुगेदर. दैट इज द डिमांड. तो इनके बीच का कोलैबोरेशन आपको किस तरीके से ये जो है एक साथ काम करते हैं, विद सर्टेन एग्जांपल्स आपको बताना पड़ेगा. ओके, विद सर्टेन एग्जांपल्स यू हैव टू. एंड सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट है कि कैसे ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं. सेकंड पार्ट है कि व्हेन दे बोथ कम टुगेदर व्हाट इम्प्लीकेशंस. इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या इम्प्लीकेशन है? इट मेक्स इट मोर चैलेंजिंग. तो क्या चैलेंजेस आ जाते हैं इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, दैट यू हैव टू टेल. सो फर्स्ट पार्ट कि कैसे दीज ग्रुप्स कोलैबोरेट, कैसे ये दोनों साथ आके काम करते हैं. और सेकंड पार्ट है कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है. ठीक है, दैट हाउ इट इम्पैक्ट्स द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया. ओके, चाहे फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, और कैरिंग आउट टेरर अटैक्स हो उस केस सिनेरियो में, या नार्को टेररिज्म हो, मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर जो है टेरर फाइनेंसिंग हो, ये सब जो है डिफिकल्ट हो जाते हैं टैकल करना. ओके, एंड ऑब्वियसली कंक्लूजन, सो आप समझ ही गए हो कि ये प्रॉब्लम है, दैट प्रॉब्लम है. तो कंक्लूजन वुड बी मोर अबाउट फॉरवर्ड लुकिंग, ऑप्टिमिस्टिक, सोल्यूशन ओरिएंटेड. तो कंक्लूजन जो आपका रहेगा दैट वुड बी अराउंड द सोल्यूशन. तो फर्स्ट पार्ट है कि केसेस. इंट्रोडक्शन इज, तो अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊं इस क्वेश्चन का, इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, सो इंट्रो में क्या हम डील करेंगे? इंट्रो में हम बताएंगे कि व्हाई डू दीज टेरर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स कोलैबोरेट, दी व्हाई ऑफ, व्हाई दे आर कमिंग टुगेदर, व्हाई दे आर वर्किंग टुगेदर, ये बताएंगे, राइट? दैट्स व्हाट वी विल टेल. फिर जब बॉडी में आएंगे तो सबसे पहला एलिमेंट कि वेज इन विच दे आर वर्किंग टुगेदर, इन विच दे आर वर्किंग टुगेदर. ठीक है, किस तरीके से दे आर वर्किंग टुगेदर ये बताएंगे, राइट? देन वी विल टेल कि हाउ इट मेक्स अवर इंटरनल सिक्योरिटी, मैनेजिंग अवर इंटरनल सिक्योरिटी डिफिकल्ट, राइट? सो द इम्प्लीकेशंस, right? Implications.
what are the implications for internal security, right? और फिर जब आदर, क्योंकि see this was a 10 marker, we had given you it is a 10 marker. ओके, सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन 10 मार्कर इज कि आपको 150 वर्ड्स लिखने, यानी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, एग्जांपल्स भी दो तीन देने, बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने हैं एग्जांपल्स को, ठीक है? ओके, एंड कंक्लूजन क्या रहेगा? कंक्लूजन वुड बी दैट वे अहेड, कि क्या किया जा सकता है, यू नो हाउ, you know what government should do or how this problem can be solved, right? क्या किया जा सकता है? ओके, इज इट क्लियर? तो अगर अब इंट्रोडक्शन पे आए तो हम, सो इफ यू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, सो इंट्रो में आप सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो दैट बोथ, जो हमारे सी दिस इज हाउ यूर, इस तरीके से आपका थॉट प्रोसेस काम करना चाहिए। अगर मैं सीधा लिखना शुरू कर देता बिना इस स्ट्रक्चर के, बिना इस डिमांड को समझे, बिना क्वेश्चन को पार्ट्स में ब्रेक किए मैं सीधा लिखता, इट वुड हैव बीन वेरी टफ। नाउ सी कि एक बार मैंने उसको ब्रेक किया पार्ट्स में, कीवर्ड्स पकड़े, डिमांड समझा, और फिर मैंने उसको स्ट्रक्चर करके लिख रहा हूँ, राइट? नाउ ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टाइम लग रहा है, बट जब आप खुद से करोगे डेफिनेटली आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, अपने लिए करना, दैट टू इन योर माइंड। तो ये पूरी एक्सरसाइज 1 मिनट 1-2 मिनट के अंदर हो जाती है, फिर आप लिखो। तो इंट्रो में की क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं? बिकॉज बोथ यू नो टेरर ग्रुप्स or terrorist organizations and your both the terror organizations and organized criminal networks have what they have, you know, certain common methods to achieve their goal, or certain common, you could say, requirements to achieve their requirements to achieve their goals, you know, to achieve their ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, राइट? दोनों का कुछ ना कुछ कॉमन जो है यू नो मेथड्स है, इवन दो कि ऑब्जेक्टिव अगर प्राइमरीली हम देखें दोनों का डिफरेंट है, राइट? ऑब्जेक्टिव दोनों का डिफरेंट है, बट दे हैव सर्टेन कॉमन मेथड्स, कॉमन रिक्वायरमेंट्स, और यू नो कॉमन वेज ऑफ डूइंग थिंग, you could also write it as common ways, and because of this they are collaborating with each other, and because of this they, at times we have seen, at times we have observed, or increasingly we have observed, increasingly we have seen that they are, you know, working together for their objectives, right? Working together for their mutual benefit or to support, and this scenario makes internal security more, dealing with these threats more challenging, ठीक है? You could write that as well. अब आ जाते हैं बॉडी में। सो नाउ द मेन थिंग कि हाउ दे आर कोलैबोरेटिंग, नाउ यू हैव टू टेल दैट हाउ, व्हाट आर दी कोलैबोरेशन मेथड्स और वेज इन विच दे आर वर्किंग टुगेदर, राइट? तो कैसे हो रहा है? तो सबसे पहला जो हो रहा है, इट इज इन यू नो रिगार्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and money laundering, right? Both are supporting each other in this, okay? Many times what is happening is that mainly terror groups are relying on organized criminal networks, right? Organized criminal networks to arrange terror financing, and bypass, to arrange or to move terror financing and bypass the, you know, various economic sanctions or restrictions, bypass the various restrictions, okay?
under laws like unlawful UAPA, under laws like UAPA टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड चीजें को बैन करता है, ठीक है. So through this they arrange terror financing, they hide their terror financing, they move their terror financing. दूसरी चीज है कि where they are collaborating is drug trafficking, where they are working together is drug trafficking. Again यहाँ पे this is used by both, both are, there is a nexus between both are having a nexus due to or nexus to gain financial benefits or financial resources from drug trafficking, and this is leading to what we know as problem of narco terrorism. This is leading to, you could write, narco terrorism. See, ये नार्को टेररिज्म वर्ड आपको यहाँ पे यूज करना है. दिस, अब ये भी याद रखिए, आपने कई बार सुना होगा, यू हैव टू यूज कीवर्ड्स इन योर आंसर. तो ये यूएपीए जो हमने यूज किया, टेरर फाइनेंसिंग जो यूज किया, ये कीवर्ड्स होते हैं. लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम ऑफ, हालांकि ये चाहे तो आप यू कुड हैव रिटन इट सेपरेटली इन योर व्हाट वी से implications of increasing problem of नार्को टेररिज्म. ओके, ठीक है. तो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं. सो अगेन दिस इज मेनली ड्रग ट्रैफिकिंग. ये सब ऑपरेशंस भी क्यों यूज हो रहे हैं, राइट? दिस इज यूज्ड टू जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर टेरर ऑर्गेनाइजेशंस. देन आर्म्स स्मगलिंग, right? So arms smuggling is again, what is happening is ki this is used to provide logistical and weapons support to terrorists to carry out terror attacks, right? And then human smuggling, right? Human trafficking. So यहाँ पे this helps in movement of terrorists, right? So in this both are involved. Firstly, this helps in movement of terrorists, and also this is used by both to again generate funds to finance terror activities. Okay, funds to finance terror activities. ठीक है. तो ये कुछ 3-4 मेन चीजें आप जो है कि दिस इज द एरिया जहां पे ये जो है कॉमन मेथड्स ये दोनों यूज कर रहे हैं. एंड अगेन दिस दे आर यूजिंग व्हाई टू, अगेन मेनली क्या कर रहे हैं इससे जनरेट, इससे एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता है टेरर ग्रुप्स को, इससे जो है फंड्स ज्यादा जनरेट, दोनों साथ में काम करते हैं. सो दे आर एबल टू जनरेट मोर फंड्स, दे आर एबल टू कैरी आउट दीज एक्टिविटीज इफेक्टिवली. तो टेरर फंडिंग भी बढ़ जाता है, प्लस ऑर्गेनाइज्ड जो क्रिमिनल नेटवर्क है दे आल्सो गेट सपोर्ट फ्रॉम टेरर ग्रुप्स एंड देयर नेटवर्क. सो दैट मेक्स देम more what say carry out their nefarious activities easily. Okay, that is there. Plus in fact एक और एरिया आप ये बोल सकते हो कि to create undue influence in government and security machinery through nexus with bureaucrats and politicians. Okay, ये चीज इनफैक्ट इट इज नॉट समथिंग, अगर सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है डी कंपनी एंड योर डी कंपनी एंड इट कैरीड आउट 1993 ब्लास्ट. तो उस टाइम पे बहुत क्लियरली एक वोरा कमिटी रिपोर्ट आई थी विच क्लियरली हाईलाइटेड कि इस ब्लास्ट में जो है there was an excess certain people from the side of the government, bureaucrats or politicians were also involved. That was there. Plus दूसरी चीज डी कंपनी के बहुत ही क्लियर कट लिंक्स हैव बीन सीन
with your Lashkar-e-Taiba and other, like Indian Mujahideen and other kinds of terror organizations. ठीक है? Then एक और example, अगर फिर you could give examples. So एक तो ये example हो गया. दूसरा example क्या होगा यहाँ पे? नार्को टेररिज्म का the Taliban in Afghanistan. And you have to highlight that how through that there is a problem of drugs in Punjab, right? Taliban in Afghanistan has control over all the opium there, so this is boosting the narco terrorism. As a result, lot of there is problem of drugs in Punjab, which is generating revenues for terror organizations across the border in Punjab in Pakistan, right? तो पाकिस्तान के बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, वो यहाँ से तालिबान जो है इनसे दे गेट दी ओपियम एंड दे आर स्मगलिंग इट इनटू इंडिया. ठीक है, तो ये एक दो एग्जांपल काफी रहेंगे. ओके, देन इम्प्लीकेशंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इनफैक्ट चाहे तो आप इम्प्लीकेशन साथ में ही लिख सकते हो, राइट? सो इट मेक्स tracking the terror finance difficult. Tracking and countering terror finance, which you could write make phrase भी लिख सकते हो, terror finance is lifeline of terrorism. So tracking and countering and stopping the terror finance difficult. It increases the what we say complexity of terror threats, right? Because now they have further logistical support from your other organizations. It also increases the risk to the financial system. Risk to the financial system of country. Then it also creates border management challenges, particularly due to drug trafficking, arms smuggling, human trafficking. So border management challenges. So makes it difficult. Okay, so these are there. And again, this is something it could further make it difficult to gather intelligence, right? So difficult to gather intelligence. ठीक है, तो ये की implications है. Now comes conclusion. तो conclusion क्या रहेगा? So what would be the conclusion? Please tell. So simply you could write कि ये दोनों का जब साथ में आ रहे हैं, right? So the convergence, that is all coming together of terror groups and your what we say terror groups and the organized criminal networks makes the existing internal security challenges more complex and creates new challenges like narco terrorism. Okay, right? So to deal with this, we need a multi-pronged approach which focuses on what? Better intelligence capacities, strengthening state police forces, strengthening border management, border security and management, and what we could say,
कि we could have make our financial system more secure and robust. So make financial system more and make financial system more, and financial system should be made more transparent and secure. So अगर ये चीजें करेंगे तो definitely we would be able to deal with it. So this is how you would write in 150 words the answer to this. Okay, इस तरीके से आप जो है आंसर करोगे इसको. एंड अगेन ट्रस्ट मी, ये दिस इज क्वाइट अ मेजर रिपीटेड थीम. एक चीज जो मैं आपको बोलूंगा कि नार्को टेररिज्म, दिस इज वन ऑफ द मेजर इमर्जिंग इश्यूज. ये बहुत ज्यादा न्यूज में है. कई बार ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात अगर आपने देखा होगा, टाइम एंड अगेन दी ह्यूज कंसाइनमेंट्स जो है पकड़े जाते हैं ड्रग्स के. ओके, शिप्स एंड बोट्स पे. तो इसको प्लीज जरूर अच्छे से पढ़ना. नार्को टेररिज्म, इट इज एन इमर्जिंग एंड मेजर इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज. ठीक है, तो आपको इसके क्या पता होना चाहिए नार्को टेररिज्म के, कि व्हाट इट इज, राइट. दूसरा इसके कॉजेस, कि अभी क्यों इतना बढ़ गया है. तीसरा इसका इम्पैक्ट. चौथा इसको डील करने के लिए व्हाट इज बीइंग डन, राइट, क्या किया जा रहा है, हाउ टू डील विथ इट, हाउ टू डील विथ इट. और इसमें इंक्लूड करने की गवर्नमेंट ने भी क्या किया. ठीक है, ओके. ओके देन, let's then conclude. Okay everyone, then let's conclude today's session. So anyone has any doubt, please ask. So शिवांश, अगर कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, सबसे पहला स्टेप होता है कि टेक योर टाइम, मेक योर स्ट्रेटजी. ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी बनाओ बिना सोचे समझे. इट्स लाइक अ चक्रव्यूह. तो पूरा एंड तक चक्रव्यूह को पूरा भेदने का, यानी पूरा एंड तक का जो है सोच के स्ट्रेटजी बना के चलो. ठीक है, वंस, और अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, कैसे करना है, देन टेक हेल्प एंड गाइडेंस फ्रॉम समवेयर. बट फॉर स्टार्टर्स आप प्लीज सिलेबस को रेफर करो. ठीक है, और एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट दैट इज कम्स ओनली आफ्टर कि आपने कुछ स्ट्रेटजी और प्लान एक ब्रॉड लेवल पे बनाया है. ठीक है, ओके देन एवरीवन, सी यू अगेन नाउ ऑन मंडे.